गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट टू यूनियनाइज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सैमसंग इंडिया के वर्कर्स जो हैं तमिलनाडु में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि उनको रजिस्टर करने दिया जाए ट्रेड यूनियन को, ताकि कलेक्टिवली वो बारगेन कर सकें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या टर्म्स के लिए। तो वो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट वो साइन करना चाहते हैं सैमसंग के साथ अपनी वर्क कंडीशंस को लेकर। वो एक न्यूली फॉर्म्ड यूनियन बनाना चाहते हैं, उसको रिकग्निशन दिलवाना चाहते हैं और वो उसके थ्रू जो है वो इंक्रीज़ इन वेजेस की भी डिमांड कर रहे हैं। तो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। 1989 में BR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर फंडामेंटल राइट, इसमें भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस जो है वो एसेंशियल रहती हैं वर्कर्स के ग्रीवेंसेस को वॉइस करने के लिए। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के अंडर रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेड यूनियंस की जा सकती है। सिर्फ 7 मेंबर्स मिलकर भी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस केस में डिफाइन किया कि ट्रेड यूनियंस एक्ट का पर्पस ही ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब बेसिक एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर रहता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज भी किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग इकट्ठे हो गए हो और एक यूनियन बना लिया आपने, ताकि आप मैनेजमेंट के साथ जो है वो बार्गेन कर सको टर्म्स ऑफ वर्क या फिर वर्किंग कंडीशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसकी रूट्स 18th और 19th सेंचुरी में जो है हमको देखने को मिलती हैं, जब कोल माइनर्स जो है वो बेसिक वर्क कंडीशंस के लिए लड़ते थे। कलेक्टिव बार्गेनिंग को जो है 1918 के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी हम देख सकते हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा लड़ थी। ठीक है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिस्टेंटली रिकग्नाइज़ किया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखें अगर राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो वर्कर्स कर सकते हैं अपनी राइट्स के लिए, लेकिन जैसे कि आप वो गो स्लो कर सकते हैं, सिट इन वर्क कर सकते हैं, वर्क टू रूल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो राइट टू स्ट्राइक को लेकिन एब्सोल्यूट नहीं मानता है। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयर को या मैनेजमेंट को 6 हफ्तों का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि वो एक स्ट्राइक करना चाहते हो आप, तभी उस स्ट्राइक को वैलिड माना जाएगा। यूनियंस जो है वो विद इन द बाउंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ ही जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, जो कोर इशू क्या है सैमसंग में, सैमसंग के जो वर्कर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी यूनियन बनी है सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन, वो उसको जो है वो CITU के अंदर जो है वो बैनर में जो है वो काम करने देना चाहते हैं। मतलब जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से लीनिंग एक लेफ्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो है वो इस डिमांड को नहीं मानना चाहती। कंपनी कहती है कि कोई भी यूनियन जो है हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो है वो किसी आउटसाइड जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज नहीं हो सकती। सैमसंग का ये भी कहना है कि जो ये SIWU, इसमें सैमसंग का आप नाम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सैमसंग का आप नाम यूज़ करोगे तो वो ट्रेडमार्क की वायलेशन है। बहुत सारे प्रोटेस्टिंग वर्कर्स जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको जो है इंक्रीज़ इन वेजेस नहीं मिला है, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है बियॉन्ड देयर 9 आवर शिफ्ट, और उनके जो नेचर ऑफ वर्क है उनको उसमें बहुत देर खड़े रह रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक एस्केलेशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो है 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को जो है इंक्लूडिंग उनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को जो है वो विड्रॉ करवा दिया है यहाँ से, मतलब एक तरह से एक्सपेल कर दिया है, और अपने भी हाई कमिश्नर को वहाँ से विड्रॉ कर दिया है। तो अगर हम देखें इंडिया कनाडा रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1947 में इस्टेब्लिश हुए। बायलैटरल रिलेशंस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पर पहुँचे PM मोदी की विजिट के टाइम पर 2015 में। इंडिया जो है कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कनाडा के पास $4.10 बिलियन के थे, इंपोर्ट्स $4.05 बिलियन के थे। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी स्टार्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी, और इंटरिम एग्रीमेंट जो है अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने जो है वो लाने का भी फैसला किया है। ठीक है, तो कनाडा जो है वो
अगर हम देखें इंडिया को न्यूक्लियर फील्ड में भी हेल्प कर रहा था 1956 में, लेकिन वो जो हेल्प रुक गई 1974 में जब स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने। जून 2010 में न्यूक्लियर ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कनाडा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा को होल्ड करता है वर्ल्ड में। लगभग 1.6 मिलियन NRIs और PIOs वहाँ पर रहते हैं इंडिया के, जो कि कनाडा की 4% पॉपुलेशन का के इक्वल है। तो 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जो इंडियन ओरिजिन के अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है वो मेंबर हैं कनाडा में। कनाडा लेकिन जो है वो एक सेफ़ हेवन बन गया है सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स के लिए, जो न्यू दिल्ली कहता है कि लिबरल पार्टी जो है वो इन ग्रुप्स के आगे जो है वो वोट के लिए पैंडर कर रही है। इवन जो ट्रूडू के जो अलाए थे NDP के जगमीत धालीवाल या जगमीत सिंह, वो भी जो है वो सस्पिशन से उनको देखा जाता है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। लास्ट ईयर ही न्यू दिल्ली ने जो है कनाडा को जो है कहा कि जो खालिस्तानी सेसेशनिस्ट रेफरेंडम किया गया सिख डायस्पोरा द्वारा उसको रोका जाए, बट कनाडा ने उसे नहीं किया, ठीक है। तो मासिव कंट्रोवर्सी तब हुई अभी जून 2023 में, जब सोशल मीडिया वीडियो एक निकली कि परेड फ्लोट की जा रही थी कि PM इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को जो है वो रीइनैक्ट किया जा रहा था कनाडा में, और इंडियन ओरिजिन पीपल के ऊपर भी बहुत से अटैक्स किए गए हैं, ठीक है। तो हरदीप सिंह निज्जर केस क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर जो एक वांटेड टेररिस्ट था, उसको टारगेटेडली शूट किया गया जून 2023 में, और उसके ऊपर 10 लाख का अवार्ड भी था इंडिया में NIA द्वारा। और उसने जो है वो एक हिंदू प्रीस्ट को पंजाब के जलंधर में जो है वो मार दिया था। निज्जर जो है उसको गुरुद्वारा के बाहर सरी में मार दिया गया, और ये इशू जो है वो रेज़ किया गया जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा PM मोदी के साथ। तो PM मोदी ने जो है वो जो है अपने डीप कंसर्न्स कैनेडियन PM को बताए कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ चल रही हैं कनाडा में, उसको रोकना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रूडू ने पार्लियामेंट को बताया कि कनाडा जो है वो एक्टिवली परसू कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कि उन्होंने निज्जर को मारा है, और इंडिया ने इस पूरी असर्शन को एब्सर्ड कहा कि कोई एविडेंस नहीं है। 1.5 साल हो गया है ऑलमोस्ट इस केस में, कोई एविडेंस आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, कोई एविडेंस है ही नहीं आपके पास एक्चुअली, आप उसको सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिया ने जो है अपने डिप्लोमेट्स को विड्रॉ किया, क्योंकि अभी रिसेंटली कनाडा ने कहा कि ये जो आपके जो डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं इंडिया के, वो हमारे लिए पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इंडिया ने इसको जो है वो एक रेड लाइन क्रॉस करना माना, और इंडिया ने इसलिए जो है कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ट्रूडू के स्टांस पर बहुत ही क्रिटिकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जस्टिन ट्रूडू ही जो है ये खालिस्तानीज़ को पैंडर करते हैं, इनफैक्ट इनके फादर भी जो थे लिबरल पार्टी में ही थे 1980s में, उन्होंने भी सेम यही एग्जैक्ट बिहेवियर किया था, खालिस्तानीज़ को पैंडर करते थे वो भी। और उसी टाइम पर एयर इंडिया कनिष्क बॉम्बिंग भी हुई थी, और उसके बाद जो है इंडिया कनाडा के टाइज भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। सेम वही स्क्रिप्ट, सेम सब कुछ अब जो है जस्टिन ट्रूडू भी अपने फादर की लेगेसी को जो है वो लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो ये खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो लिबरल पार्टी के कोर वोटर्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महा EV मिशन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अनाउंस किया है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। तो ये डेवलप करेगा की EV टेक्नोलॉजीज़ ताकि रिड्यूस की जा सके डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। ये कोलैबोरेट करेगा क्रिटिकल साइंटिफिक चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। थ्री क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स पर फोकस रहेगा: ट्रॉपिकल EV बैटरीज और बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स एंड ड्राइव्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेगा, डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए एसेंशियल EV कंपोनेंट्स, ओके। तो ये हमारे लिए डोमेस्टिक जो है ये कंपेटिटिवनेस को भी बढ़ाएगा, और इंडिया को एक हब फॉर EV कंपोनेंट डेवलपमेंट की तरह ये आगे लेकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा स्पीकर जो है इंडिया के, वो भी इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जिनीवा में। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो IPU है क्या, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स की, जिसको 1889 में बनाया गया था,
ताकि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी फैसिलिटेट की जा सके। ये इनकरेज करता है कोऑपरेशन और डायलॉग बिटवीन ऑल नेशंस। इसमें अभी 180 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और 15 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फाइनेंस इसको प्राइमरली मेंबर्स ही करते हैं अपनी पब्लिक फंड से। और आईपीयू की जो असेंबली है वो प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें हर मेंबर, मतलब हर कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है उसमें से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इसमें गवर्निंग काउंसिल में रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दिया है एक पीआईएल को एंटरटेन करने के लिए, जो कि चाहती थी कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन, ट्रांस पर्सनस या एनिमल्स होते हैं उसको भी जो है बीएनएस में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो ये 142 की पावर है, ये जो है उनको एम्पावर करती है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सके और ऐसा ऑर्डर पास कर सके जिससे कंप्लीट जस्टिस हो सके, ठीक है। तो कोर्ट को ये पावर मिलती है स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि वो जस्टिस लिटिगेंट्स को दे सके, चाहे अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में जो है कोई लॉ ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को डिलीवर करने के लिए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए एक्सेप्शनल केसेस में पावर देता है, जहाँ पर ऐसा कोई एक पेज फंस जाए जहाँ पर कोई इंडिया में लॉ नहीं एग्जिस्ट करता उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आर्टिकल 142 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस डिलीवर करने के लिए जो है वो एक तरह से ऑर्डर पास कर सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टिकल 142 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और बाद में पार्लियामेंट ने उसको ओवरराइड कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में, दोनों टाइम पर आर्टिकल 142 की ही पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जजमेंट सुनाई है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोपॉलीमर्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपना इंडिया का फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी बायोपॉलीमर्स की पुणे में इनाग्रेट की है, जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे बायोपॉलीमर्स को बायोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर्स, रेजिन्स और प्रोटीन से। तो बायोपॉलीमर्स बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनकी डीकम्पोजिशन बहुत ईजिली हो जाती है बैक्टीरिया से सॉइल एनवायरनमेंट में, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं ये ऑक्सीडेशन के थ्रू, और इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती है, ठीक है, जबकि ये प्लास्टिक नहीं होते हैं। तो इस पॉलीमर्स का यूज़ करने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है रिड्यूस होंगे एटमॉस्फेयर में, और कार्बन एमिशंस भी इसीलिए जो है वो रिड्यूस होंगे, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिसेफ। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ ने रिसेंटली कहा है कि इंडियन सप्लायर्स जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ और न्यूट्रिशन सपोर्ट जो ग्लोबली चिल्ड्रन को दिया जाता है। तो यूनिसेफ को 1946 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बनाया गया था, ताकि चिल्ड्रन और यंग लोग जो जिनकी लाइव्स और फ्यूचर रिस्क पर थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, उनको हेल्प किया जा सके। 190 कंट्रीज़ में काम करता है, फंडेड एंटायरली ये वॉलंटरी सपोर्ट से होता है। मिलियंस ऑफ पीपल जो अराउंड द वर्ल्ड इसको सपोर्ट देते हैं, और नोबेल पीस प्राइज़ इसको मिला है, इंदिरा गांधी प्राइज़ भी मिला है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में ही, ठीक है। कई तरह की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स, ओके। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थर्ड मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल ने रिसेंटली मिलिट्री ऑपरेशन हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इंटेंसिफाई कर दिया है, इसलिए यूएस ने फैसला किया है कि वो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड जो है वो इसराइल में डिप्लॉय करेगा। तो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि एंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकता है शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को टर्मिनल फेज ऑफ फ्लाइट के बीच में। तो इसके हिट टू किल अप्रोच फॉलो करता है ये, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इनकमिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका ये एक बहुत वाइड एरिया को कवर कर सकता है, जिसके डिस्टेंस बिटवीन 150 to 200 किलोमीटर्स तक रहते हैं। इसको यूएस ने डेवलप किया था जब इराक की वॉर हुई थी, गल्फ वॉर 1991। उसके एक्सपीरियंस के बाद यूएस को रियलाइज़ हुआ कि ये थर्ड सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is right to unionize. This topic is important for your social issues and your governance section. So recently protests by Samsung India workers in Tamil Nadu have erupted, and these protests are centered around their demand of fundamental right to form a registered trade union and to collectively bargain for better employment opportunities, ठीक है। So
These workers are aiming to negotiate a collective agreement with Samsung, and they are demanding recognition of their newly formed union and increase in wages. So, what is the right to form trade unions? So, in 1989, B.R. Singh in B.R. Singh versus Union of India case, Supreme Court upheld the right to form associations or unions as a fundamental right under Article 19 of the Constitution. Restrictions under Article 19 also apply to it in case of public order, morality, sovereignty, or integrity of India is at risk. Then, in that case, such restrictions can be made applicable. So, trade unions are essential for voicing workers' grievances. The court has emphasized it repeatedly. So, registration of these trade unions can be done under Trade Union Act of 1926, and even 7 members can apply for such registration. Okay. So, what is the concept of collective bargaining? Madras High Court has defined the purpose of Trade Unions Act as facilitating the collective bargaining process in the Rangaswamy versus Registrar of Trade Unions case. Collective bargaining basically means that negotiations between employees and employers can be done so as to establish working conditions and terms of employment only through this trade union. So, some labor law scholars also describe collective bargaining as a balance of power between workers and employees. In India, collective bargaining is recognized as a statutory right under the Industrial Disputes Act of 1947. So, collective bargaining has its root in late 18th and early 19th century when coal miners fought for basic work conditions. So, in India, early traces of collective bargaining were seen during the 1918 Ahmedabad mill strike led by Mahatma Gandhi. So, Indian Supreme Court has also consistently recognized the importance of collective bargaining to achieve social justice. Okay. So, what is the right to strike? So, basically, it's a legal right under the Industrial Disputes Act of 1947, and Supreme Court has viewed this strike as a form of demonstration by workers to assert their rights. So, they can do it in the form of go slow, sit in work, and work to rule. But under Industrial Disputes Act, it does not mean that a right to strike is absolute. For example, Section 22 mandates that conditions for a valid strike should be there, like the requirement of giving notice to the employer should be at least 8 weeks. So it should be at least 6 weeks in advance. Only after that, you can go for strike. Unions must also operate within the bounds of industrial law. Okay. So why are Samsung workers protesting? So basically, these Samsung India Workers Union, they are demanding recognition of their newly formed union under the banner of Center of India Trade Unions, which is a Communist Party left-leaning labor organization. The Samsung company is resisting this demand by saying that it is against the idea of a union which is engaging in collective bargaining but using leaders from outside, because leaders from CITU are being used. Samsung's management had also objected to Samsung India Workers Union registration on the ground that the name Samsung is in this union will be a trademark violation. Okay, so many protesting workers have complained about not receiving an increase in their wages in the past, despite Samsung India earning profits. The workers have also raised concerns over extensive long hours. They have also complained that they were made to work beyond their 9-hour shift, and the nature of their work requires them to stand for most part of the shift. So the next topic is India-Canada diplomatic escalation. This topic is important for your international relations. So India has ordered the expulsion of 6 Canadian diplomats, including the acting High Commissioner. It has also announced the withdrawal of its own High Commissioner and other diplomats from Canada, citing security concerns. So we all know that diplomatic relations between the two sides were established in 1947, and during 2015 visit of PM Modi, when the Prime Minister was PM Stephen Harper, India elevated this relationship to a strategic partnership level, and India is Canada's 10th largest trading partner. India's total exports to Canada is about $4.1 billion, and imports are about $4.05 billion. As of March 2022, the two countries were about to sign the Comprehensive Economic Partnership Agreement negotiations, but there were certain delays because of some irritants, and both countries also decided at that time to have an interim agreement on early progress trade agreement, which could bring commercial gains to both. Okay, but the trade talks were paused in September 2023 following the diplomatic row over the killing of Niger. So
Both sides have also been cooperating in the terms of nuclear cooperation. Canadian aid to India in the nuclear field began in 1956, but this relationship deteriorated in 1974 after India conducted the Smiling Buddha nuclear test. In June 2010, the nuclear cooperation was restored when a nuclear cooperation agreement was signed with Canada. Canada also hosts one of the largest Indian diasporas in the world, numbering about 1.6 million, which accounts for more than 4% of its total population. So, in the field of politics, the House of Commons in Canada has 22 members of Parliament of Indian origin. Canada has been providing a safe haven for separatist Khalistani groups, which India sees as the liberal parties pandering to these groups for votes. Last year, India objected to Canada permitting a Khalistani secessionist referendum in the Sikh diaspora. A massive controversy erupted in June 2023 over a social media video of a parade float depicting a late Prime Minister Indira Gandhi's assassination in Canada. Okay, there have been reports of attacks on Indian origin people and Canadian police and Canadian government being mute spectators in those cases. So the real problem started with Hardeep Singh Nijjar, who was a wanted terrorist by the Indian government, and he was killed in a targeted shooting in June 2023. Nijjar was shot dead outside a gurdwara in Surrey, and he also he was killed in a gang war actually, but the Canadian side started making allegations against Indian agents that they have killed this terrorist. So Canadian PM also raised this issue of foreign interference in this murder and asked India for cooperation in the investigation. On the other hand, during the meeting, PM Modi expressed his deep concerns to Canadian PM about the ongoing anti-India activities which were being carried out by Khalistani extremists in Canada. So in 2023, September, Trudeau told Parliament that Canada was actively pursuing credible allegations linking Indian government agents to Nijjar's killing, and India dismissed this assertion as absurd. India stated that it was recently after Canada made certain allegations against Indian diplomats and called them as persons of interest in the investigation. India withdrew its diplomats due to safety concerns, accusing the Trudeau government of not ensuring their security. India has been critical of Trudeau's stance on various issues, including the support to the farmers' protest in India and the leniency that his government has shown towards Khalistani separatist movements. So it is not the first time that this Trudeau government is pandering to these Khalistanis. In fact, his father in 1980s was doing the same thing in the Liberal Party when he was pandering to these Khalistanis. And after only the Air India Kanishka bombing case, the matters came to rest when he realized that he has crossed a red line with India. Okay, so hopefully the good sense prevails in Canada soon. Anyways, so the next topic is Maha EV mission. This topic is important for your environment and your science and tech section. So the Anusandhan National Research Foundation has announced the launch of mission for advancement in high impact areas electric vehicle mission. So this mission focuses on the development of key EV technologies to reduce dependency on imports, and there will be multi-agency, multidisciplinary, and multi-institutional collaboration to tackle critical scientific challenges. So the focus will be on three critical technologies, that is the tropical EV batteries and battery cells, power electronics, machines and drives, and the electric vehicle charging infrastructure. So this mission will enhance India's domestic capabilities in the design and development of essential EV components. It will also strengthen competitiveness and position India as a hub for EV component development. Okay. So the next topic is Inter-Parliamentary Union. This topic is important for your international relations. So recently, Lok Sabha Speaker has led an Indian parliamentary delegation to the 149th Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Geneva, and he has emphasized there that there is the importance of multilateralism. Okay, so what is IPU or Inter-Parliamentary Union? It is the International Organization of Parliaments, which was established in 1889 in Paris to promote representative democracy and world peace. So it facilitates parliamentary diplomacy, and it also encourages cooperation and dialogue between all nations. Currently, it comprises of 180 members,
and 15 associate members. It is financed primarily by its members and out of public funds. So IPO Assembly is the principal statutory body which expresses the views of the IPO on political issues, and the governing council is composed of three representatives from each member of parliament, and the president of IPO is ex officio president of the governing council. Okay. So the next topic is Article 142 of the Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently refused to entertain a PIL which was seeking directions under Article 142 to include sexual offences against men, trans persons and animals under the newly enacted BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. So Article 142 deals with Supreme Court's power to exercise its jurisdiction and pass an order for doing complete justice in any cause or matter pending before it. So it provides the court with the special and extraordinary power which is meant to provide justice to those litigants who have suffered through illegality or injustice during the course of legal proceedings. So Article 142 allows the Supreme Court to deliver justice in even those exceptional cases where existing provisions of laws are not applicable. Okay, so Article 142 has been invoked recently in the Babri Masjid case and the Bhopal gas tragedy case to serve complete justice. Once a judgment has been delivered under Article 142, the Parliament cannot make a law to undo that judgment. Okay. So the next topic is biopolymers. This topic is important for your environment section and also your science and tech section. So Union Minister has recently inaugurated India's first demonstration facility for biopolymers in Pune. So biopolymers are basically those materials which have been manufactured from biological sources like fats, vegetable oils, sugars, resins and proteins. Biopolymers are biodegradable and their decomposition is easily done by bacteria in the soil environment. They can control the life processes of living organisms and they are environment friendly. They can be decomposed easily by oxidation and they show plastic properties. Okay, so without being plastic in fact. So these polymers can reduce carbon dioxide levels in the atmosphere and also decrease the carbon emissions. Okay. So the next topic is UNICEF. This topic is important for your international relations. So recently, United Nations International Children's Fund, UNICEF, has said that Indian suppliers are the third largest provider of organizations' health and nutrition support to children globally. So UNICEF was established in 1946 in the aftermath of World War II, and the aim is to help children and young people whose lives and futures were at risk at that time, even now. So it works in over 190 countries and territories to protect the rights of every child. It is funded entirely through the voluntary support of millions of people around the world and our partners in government, civil society and private sector. It has received the Nobel Peace Prize, Indira Gandhi Prize and even Princess of Asturias award in 2006. So it publishes the State of the World's Children report and it is headquartered in New York City. Okay. So the next topic is THAAD missile system. This topic is important for your security section. So as Israel has intensified its military operation against Hezbollah, US has decided that it will deploy a missile defense system called the Thermal High Altitude Area Defense Battery to Israel. So it is a missile defense system which can engage and destroy short, medium and intermediate range ballistic missiles during their terminal phase of flight. So basically it has a hit to kill approach which blasts missiles as they enter their target zone during their descent. It also uses kinetic energy to destroy incoming nuclear warheads. It can cover a wide area, engaging targets at distances between 150 to 200 kilometers. And it was developed by the US after their experience of Iraq's Scud missile attacks during the Persian Gulf War in 1991. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.